Good morning students, welcome to e-learning classes provided by St. Michael's Academy. In this video, I am going to teach class 3 maths. In previous video, children, already I have taught you exercise 9E, 9E. But 9F, in 9F exercise, you will add arrange in column and add. आप लोग खुद से इसको क्या करोगे? ऐड करोगे. 9F तक मैं बताई हूँ आप लोग को. मल्टीप्लाई सेम प्रोसेस से आप करोगे. मल्टीप्लाई सिंपली जैसे आप लोग करते हो मल्टीप्लाई वैसे करोगे. सिर्फ आपको सिंपल लिखना है. ग्राफ व्हाट्स प्रॉब्लम है मैं बताई थी कुछ आप लोगों को. Today we will start new chapter. Okay, children. Chapter 10 money. Chapter 10 money. The symbol of rupees. First we will understand the symbol of rupees. Symbol of rupees is rupees. ऐसा हम लिखते हैं rupees को ऐसे भी लिख करते हैं. We know that 1 rupees is equal to 100 पैसा. 1 rupees में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसा and 1 पैसा is equal to 1 पैसा is equal to 1 by 100 rupees. Okay, children. Rupees 25.35. ये जो पॉइंट के बाद 35 होता है ये किस चीज का ये सिंबल ये पैसे का सिंबल है. पॉइंट के बाद हम लोग नंबर सिंबल लेते हैं वो सिंबल किस चीज का है? पैसे का. और पॉइंट के बिफोर सिंबल ये किस चीज का सिंबल है? रुपीस. ओके चलिए. एंड हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे कि यहाँ 5 पैसे को हम लोग कैसे लिख सकते हैं. रुपीस 0.05 is equal to 5 पैसे. मीन्स ये रुपीस कितना है यहाँ पे 0 है. बट पैसा का हम लोग को शो करना है यहाँ पे पैसे कितने 5. सो वी राइट हियर रुपीस 0.05 is equal to 5 पैसा. रुपीस 1 is equal to 100 पैसा हम लोग लिखे हुए हैं वहाँ पे. हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल समझेंगे एक्सरसाइज 10A. 10A एक्सरसाइज क्वेश्चंस और सॉल्व करोगे. राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन फिगर. राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन फिगर्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज रुपीस 148 रुपीस एंड 60 पैसे. ये हम लोग को किसी में दिया हुआ है? वर्ड्स में दिया हुआ है. इसको हम लोग को किसी में लिखना है? फिगर में. सो यू कैन राइट हियर रुपीस 148.60. ये 148 किस चीज को यूज कर रहा है? रुपीस को एंड 60 पैसे. एक एग्जांपल और मैं समझा दूंगी. 99 रुपीस एंड 48 पैसे. रुपीस 90.45. ओके चिल्ड्रन. सेकंड क्वेश्चन इज राइट इन वर्ड्स. राइट इन वर्ड्स. ये दिया हुआ है रुपीस 70.50. इसको हम लोग वर्ड्स में लिखना है. जस्ट इसके अपोजिट 70 रुपीस. ये किस चीज को डिनोट कर रहा है? रुपीस. सो यू कैन राइट हियर 70 रुपीस एंड 50 पैसे. ओके चिल्ड्रन. 95 पैसे. 95 पैसे. This we can write like this. And next question, convert into पैसे. Convert into पैसे. यहाँ दिया हुआ है रुपीस 0.05 जो मैं आपको यहाँ एग्जांपल बताऊंगी इक्वल टू हाउस पैसे. सो यू कैन राइट हियर रुपीस 0.05. यहाँ रुपीस की प्लेस पे क्या है? 0 है और पैसे की प्लेस पे क्या है? 5 है. सो वी कैन राइट हियर 5 पैसे. ओके चलिए. 0.50 रुपीस 0.50. Here is in the place of rupees here is 0. So you can write here only 50 paise. And next example, question number 4. Change to rupees and paise. 1000 paise. 1000 paise. हम लोग को कन्वर्ट करना है कि ये रुपीस और पैसे दोनों में को शो करके दिखाना है. Since we can write here since 1 paisa is equal to 1 by 100 rupees. So we will what we will do? We will divide 1000 by 100. We will divide 1000 by 100. We will get here
₹10। आप 100 से 1000 को डिवाइड करेंगे तो कितना हम लोग को मिलेगा? विल गेट ऐसे ₹10। So we can write here ₹10. So answer will be ₹10. पैसे यहाँ इसमें क्या पैसे नहीं है क्योंकि ये हम लोग को कितना आ रहा है? ₹20 में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पैसे, इसको हम लोग को रुपीस में दिखाना है, पैसे में दिखाना है। तो ये हम लोग 5 by 100 इसको लिखते हैं, we know that 1 paisa is equal to 1 by 100, so you can write here 5 paisa is equal to 5 by 100 rupees। ये हम लोग डिवाइड करेंगे 0.05, यहाँ पैसे के रुपीस के प्लेस पे क्या है 0 होगा एंड पैसे के प्लेस पे 5 पैसा, तो ऐसा करेंगे 0.05 पैसा। नेक्स्ट question is question number 5. Answer the following. How many 5 rupees coins make ₹25? कितने रुपीस आप लोग को ये चाहिए जो कितना बना दे सकता है? 25 रुपीस बना सकता है। तो 5 रुपीस से कितने कॉइन्स होंगे कि आप 25 आपको रुपीस मिलेगा? We can write here. You can write here 5 rupees 5 को हम लोग कितने टाइम्स रिपीट करेंगे हम लोग को कितना मिलेगा? 25 रुपीस 5 प्लस रुपीस 5 प्लस रुपीस 5, ये कितने टाइम्स? 5 टाइम्स, 1 2 3 4 and 5 is equal to 25. We can write here रुपीस 5 को कितने टाइम में रिपीट किए? 5 टाइम्स, तो आंसर विल बी 5। आंसर कितने 5 को कितने बार रिपीट किए? 5, so answer will be the needed of rupees 5 times. Okay children, so we will solve all question answer. In next video we will discuss words problem 6 7 8 and 9.